हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें mysql कनेक्टर मॉड्यूल इंस्टॉल करना है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करना है और उसमें आपने बेस डायरेक्टरी में रहना है। सो मैं सी ड्राइव में जा रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एनाकोंडा का स्क्रिप्ट्स फोल्डर है वो किस डायरेक्टरी में है और उसका पाथ क्या है, तभी आप इंस्टॉल कर पाओगे। मुझे पता है मेरा एनाकोंडा का जो पाइथन स्क्रिप्ट्स फोल्डर है, तो मैं उसी पाथ को यहाँ पे लोड कर दूँगी। प्रोग्राम डेटा फोल्डर in which there is anaconda 3 folder, and inside that folder I have scripts folder. Here I have to write the command to install any kind of module inside the anaconda. So for the installation I am using pip install, so I have to write python pip install mysql minus connector minus python. So once you write this particular command, it is going to install the module, but you can see here the module has already been installed in my computer. See, it is written here required already satisfied, requirement already satisfied. That means this particular module is already installed in my computer, so it is showing this. Otherwise it is going to download and install that particular connector for Python connectivity. So you can install it and you can start connecting your Python program with your MySQL database. Thank you.